और अब हम बढ़ रहे हैं शाम के अपने सबसे खास और सबसे आखिरी सेशन की तरफ। आप सबका धन्यवाद, दिन भर आप हमारे साथ बने रहें एंड दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट क्रूशियल इंडीड। हमारी स्टेज भी आप देख ही रहे हैं, तैयार हो ही रही है हमारे अगले मेहमान के लिए, जो बहुत ही खास सेशन आपके लिए लेकर आए हैं। गौरव, कैसा एक्सपीरियंस रहा? फिनटेक से बातचीत करके क्या लगा? हम डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ तो रहे हैं, रोड़े बहुत हैं लेकिन नहीं। और वही फिनटेक इंडस्ट्री की डिमांड है सरकार से कि कुछ और इसको ईज किया जाए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की हम बात करते हैं, बहुत हम ऊपर जा रहे हैं, हमारी रैंकिंग बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन उसको और कैसे आगे बढ़ाया जाए वो इंडस्ट्री बात कर रही है और सरकार के साथ कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन चल रहा है, क्योंकि पिछले 5-6 सालों में इस पर काम हुआ है जो दिखता भी है। इनफैक्ट हमारे सबसे पहले सेशन में जो हमारी चीफ गेस्ट थे यानी कि अनुप्रिया पटेल जी, MOS कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वो भी यही बात कर रही थी कि UPI को कितनी जल्दी लोगों ने अपनाया है। वो जो आंकड़े पेश कर रही थी वो तो काफी चौंकाने वाले थे। बिल्कुल, और वही लगता है ऐसा कि सरकार का पूरा फोकस है इस पर, और वो फोकस कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो ग्राउंड पर आने वाले दिनों में जरूर देखेगा, बी इट डिजिटली, बी इट रेगुलेटर बेसिस। कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया, बीमा की अहमियत सिखाई, बहुत कुछ सिखाया, और ये भी सिखाया कि आप कैसे फिनटेक के ज़रिए अपनी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं। मुझे लगता है मैं एग्जांपल देना चाहूँगी, मेरी मदर जो शायद कभी एक फ़ोन को भी यूज़ करने में कतराती थी, वो भी अब जो है यूज़ करती है पेमेंट के लिए ऐप्स का इस्तेमाल करने लगी। माय मदर वाज आस्किंग कि मुझे पेटीएम चलाना सिखा दो। एग्जैक्टली। चलो ये तो बात फिनटेक की हो रही है प्रियंका, लेकिन अब आगे, क्योंकि अब एक पैसा की प्रियंका ने बताया बहुत खास सेशन है, तो प्रियंका बिल्कुल अब आपको बताना चाहिए हमारे जो आखिरी सेशन है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ द डे. In fact, the most crucial one, as I said. As equity culture is taking roots in India, the risks are also rising along with that, especially for small investors, जो सुनी सुनाई बातों पर मार्केट में पहुंच जाते हैं. And when markets turn volatile, small investors takes the massive hit. In the next session of Money9's Financial Freedom Summit, we are going to deal with a very provocative issue: why small investors should trust the stock market. Ladies and gentlemen, please welcome member of Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange, Deepan Mehta ji. And I'm going to also request Anshuman Tiwari, editor Money9, to accompany him on the stage. Please, तालियों के साथ स्वागत करते हैं दीपन मेहता जी का। एक huge round of applause for Mr. Mehta and Anshuman ji. Over to you, Anshuman sir, for the most important session of the day, sir. Thank you, Priyanka. Thank you, Gaurav. We are just at the end of our summit, and this session, before we start the session, let's play the AV so that we can again know about Money9, what Money9 is doing, and also we would like to introduce a Data Coin initiative with Deepan, and then we'll start our discussions. So kindly play the AV, please. जिंदगी की कठिन पहेली, कमाते हैं तो जी नहीं पाते, खर्चते हैं तो खाली हो जाते हैं, बचाते हैं तो फंस जाते हैं, निवेश करें तो कहां करें? अब आ गया है Money9, आपकी अपनी भाषा में देश का पहला पर्सनल फाइनेंस ऐप जो रखे आपकी जेब का ख्याल। अभी डाउनलोड करें Money9, आजादी पैसे की। सतारा में रहते हो या सहारनपुर में, जालंधर के हो या जलपाईगुड़ी के, हम्पी में ठिकाना हो या होसुर में, पैसे की जबान एक ही है, उम्मीदों की उड़ान एक ही है। अब आ गया है Money9, आपकी अपनी भाषा में देश का पहला पर्सनल फाइनेंस ऐप जो रखे आपकी जेब का ख्याल। अभी डाउनलोड करें Money9, आजादी पैसे की। Money9 brings India's first personal finance interface, the Data Coin. Money9 Data Coin will help policymakers and BFSI industry to feel India's financial pulse along the length and breadth of the country. Data Coin will exclusively provide access to granular data of India's biggest personal finance survey conducted by Money9 between May to September 2022. The personal finance survey of Money9 has covered over 31,000 households, 20 states and 100 districts. The survey findings were widely covered by the media.
Personal Finance Survey is an annual exercise, and its next edition will be launched this year, which will be wider and deeper than the last one. DataCoin will also offer secondary data on personal finance products like insurance, savings, gold, property, debt, mutual fund and stock market. Ladies and gentlemen, here comes DataCoin, India's first personal finance data interface, exclusively for policymakers and BFSI industry. Thank you. Let me welcome Deepan again. Deepan is one of those minds who actually lead the Indian stock market and the equity culture. And this session, which is very important session, as Priyanka told and our anchors told, a very provocative one. I've kept it slightly provocative for Deepan. In giving the given situation, the topic which I think Deepan can guide us best, that why should small investors trust on stock market? अगर मैं हिंदी में कहूं तो ये इस समय का सबसे बड़ा सवाल है कि छोटे निवेशकों को स्टॉक मार्केट पर भरोसा क्यों करना चाहिए, because there are a lot of things happening in last 1 year. So I'll request Deepan to speak on it, and then we will start our question answer session. So I'll request you that you can, if you want to speak from here. Am I audible? Yeah. First of all, thank you for welcoming me over here. It's been a real privilege to be part of this fabulous event. And truly, I wish and desire that your newly launched app is a great success, because that is the need of the hour. And I'm truly motivated by your objective of financial inclusion, because coming from the financial services industry, I think the only way we can go into the next orbit is when we have many more small investors coming into our ecosystem. So a little bit about today's topic, why should small investors trust the stock market? My basic take on this is that trust is a very important factor when it comes to investing in any asset. And trust is something which even the most high net worth investors, all the way to the small investor and even the poorest of the poor, when they are putting their money in any asset, bank or any chit fund or any such financial product, trust is one of the most important thing. And the reason why I think small investors should trust the stock market is at two levels. First of all, whenever we are investing our hard-earned money in any asset class, what we are investing is we are investing to achieve a particular goal. For someone who's just starting his life, it could be buying a motorcycle, buying a house. Later in age, it could be education, and then maybe children's marriage, and so on and so forth. So when we are investing money in any asset, including stocks, it is to achieve a particular goal. So the first level of trust in the stock market is, if I put my money in stocks, will I be able to achieve my goal? That's the first level of a trust factor that has to be created and is present in the stock market. Because if you look at the historical returns, and if you'll invest for a long period of time, the historical returns of the Sensex over the last 30, 40 years has been around 16%. And even if you look at the last 5, 10, 15, 20 years or so, the stock market, the indices, have been able to generate at least 12, 13% type of return. Plus you have the dividends, and there are many mutual funds and individual stock portfolios which are done even better. So from an objective of achieving your goal, you can trust the equity market to deliver decent returns, compounded returns year after year. Maybe 1 or 2 years may go badly, but over a long period of time, 3 years, 5 years, 10 years, it will generate returns which will help you meet your goal. So that's the first level, the trust comes that the stock market can help you achieve your goals. The second level of trust is the fact that you don't want to make a loss. There should not be any accident. And on that particular aspect, I'm pleased to inform you that in the last 2 to 3 years,
the entire financial services industry, mutual funds, equity, portfolio managers, AIFs, entire sector has been revamped. The regulation has been revamped by SEBI to make it far more transparent, to make it far more trustworthy, to prevent presence of any frauds, undesirable elements rocking the market. And there are so many disclosures and there are so many steps which have been taken by SEBI, by RBI, by the government to ensure that the money is safe for the investor, safe from all the intermediaries who are managing the money, safe from the companies also in which we are investing our money, because in the past there have been many issues where small companies have completely disappeared, and because of that investors lost their money. But now the way the systems are in place, the monitoring systems, the disclosure systems, the way they have to inform the stock exchange and the public at large, a lot of the loopholes have been completely blocked. So from a regulatory perspective, which is amongst the best in the world just now, the money of the investor is completely safe. One more important aspect when it comes to trust and safety is the ease of doing business in the capital market. Now, thanks to all the initiatives taken and so much of technology which has been built in, UPI and also online registration, the quantum of paperwork has gone down significantly. And now it is possible for anybody with a smartphone to seamlessly and without any document open a trading account or a mutual fund account or buy an insurance policy, then actually transact over it, make sure that whatever has been purchased has gone to their demat account, and then there are a whole host of MIS reports which are easily available at the tap of a button. So the entire process is so easy, fulfilling, and stress-free from the point of view of the investors. So I think from a trust factor, as I said, the three things: you can trust the stock market to deliver returns which will help you meet your goals. You can trust the regulator and the systems in place to ensure that there will be no frauds, there can be no complete loss of capital. And third is the ease of doing business for you as an investor in the market. I think all of these three things is what creates the trust factor, and which is what I think will draw a lot of investors into our market. Now we can keep talking about the potential of the stock market, and I'm sure through the day speakers have spoken about the potential of the stock market. But I would just like to end by saying that I've been in the stock market for 40 years, and I've never been this positive on India than ever before. I know that there are short-term tremors, there are problems from time to time, but I think there is a confluence of many positive factors. वो बोलते हैं ना, सब तारे मिल रहे हैं, so that this is going to be the decade, or the next 2 decades will belong to India. And we can go into a lot of those factors, and I'm sure you've been going through it through the day. But I think that this is a once in a lifetime opportunity for the small investor, the large investor, to invest and build lasting capital for the family, which can be intergenerational. You can transfer it from this generation to the next generation. So this is a once in a lifetime opportunity which investors should never miss. And I truly appreciate your initiative to get more and more people into the equity markets, into the mutual funds, because that's when they will get the maximum fruit of what this country has to offer. Thank you, Deepan. So I will begin the question with first question. पहला सवाल जो बाकी लोग भी हमारे दर्शक भी, and Deepan इसको हमारे 7 अलग-अलग लैंग्वेजेस की यूट्यूब चैनल्स पर लोग लाइव देख रहे हैं सुबह से इस पूरे सेशन को. Before I begin the discussion, first quick question I would like to ask you: which one most important regulatory reforms you would like to mention here in last 2 years, which can go in a long way to building trust for small investors in the stock market? Which one reforms you think that has been actually changed the entire trust factor in the stock market? एक तो पूरा हमारा सेटलमेंट सिस्टम ही बदल दिया है. सो पहले क्या था कि all of the assets were there with the stock brokers. अभी पूरा सिस्टम बदल दिया है, where the asset remains with the investor. And even when आपको security deliver करनी है, when you have sold, it is only a blocking mechanism in your demat account, or there is no actual transfer of securities from your account to the broker's account. So वो एक बहुत बढ़िया एक safety net बन गई है
for the investors because your property remains with you and only when you are selling it, it is going directly to the clearing house. और जो margining system भी है, a lot of reform has taken place over there from SEBI to ensure that the stock remains in your demat account and yet you get the benefit of trading in the stock market. So that is from point of view of investing in equities. When it comes to mutual funds, so they have done so much of reforms over there to ensure that there is no mis-selling of the mutual fund. यानी कि अगर आप large cap fund खरीद रहे हो, तो most of the stocks in that particular fund will be large cap or the universe of large cap also stocks have been defined. तो जो पूरा segregation किया है in the mutual fund industry और जिस हिसाब से transparency आई है mutual fund industry में, that also is, I think, a very important reform process. And third, of course, is the way KYC can be done without any paper. I think this is really a beautiful system. I don't think there's any parallel anywhere in the world where without any paperwork, just with your Aadhaar card, you can open any demat account, any mutual fund account, and it is so hassle-free and happens in a few minutes. So Deepan has told this one recent initiative, सबसे important initiative जो अभी हुआ है, जिसमें कि brokers के limits तय किए गए हैं और वो निवेशकों का पैसा अपने पास नहीं रोक सकते. ये बड़ा सुधार है. इस रिफॉर्म से स्मॉल इन्वेस्टर्स को काफ़ी भरोसा मिला है. इसके बाद भी एक सवाल बराबर उठता है दीपन कि भारत में बेस्ट रेगुलेटेड स्टॉक मार्केट हैं, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स काफ़ी स्पीड से हैं, एक्सचेंजेस अच्छे हैं, बट स्टिल वाई दिस इक्विटी कल्चर इज़ नॉट कमिंग अप द वे इट शुड, बिकॉज इंडिया में फाइनेंशियल सेविंग की हैबिट्स हैं, एक बड़ा हिस्सा सेविंग्स में है, फिजिकल सेविंग्स में ही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट्स ने कंसिस्टेंटली, आपने कहा 15-16% का रिटर्न दिया है, अभी पिछले 2 साल तो बहुत अच्छे रहे, उसके बाद भी व्हाट इज़ देयर वन big hurdle which is stopping people, which is not letting people to come into with more aggressively to the stock market, and why this is important, because the more people will come, more stability will come into the stock market, depth will grow, and we will see more funds coming to the market. Why this is happened? What is stopping it? So I think आपने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि हम लोग मार्केट में भी ये सोच रहे हैं कि इतने मिलियंस ऑफ डीमैट अकाउंट खुल चुके हैं, फिर भी रिटेल पार्टिसिपेशन धीरे धीरे घट रहा है, वॉल्यूम्स कम हो रहे हैं, और उसकी वजह ये है कि आउट ऑफ एक्साइटमेंट, आउट ऑफ शेयर क्राउड थिंकिंग, बहुत सारे डीमैट अकाउंट्स खुल गए हैं, बहुत सारे म्यूचुअल फंड अकाउंट्स भी खुल गए हैं, एंड पीपल हैव डेफिनेटली वेंचर्ड इनटू डायरेक्ट इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स, or they have deployed their money also, but when they are trying to do it themselves, तो उनके returns इतने अच्छे नहीं आए हैं. They are perhaps going into options, futures, या फिर ऐसे stocks में invest कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको पूरा का पूरा फ़ायदा नहीं मिल रहा है about the stock market. तो ये जो एक बहुत बड़ी need of the hour है, is the need of professional money managers. माने इंडिया में हज़ारों ब्रोकर है, but we don't have good quality investment advisors, we don't have good quality portfolio managers, और अगर आप देखेंगे तो at the absolutely HHNI level, मैंने आपके पास 1 करोड़ के ऊपर पोर्टफोलियो है, तो every fund manager, every money manager, portfolio manager is after you to manage your money. लेकिन अगर आपके पास 5 लाख 10 लाख का ही इन्वेस्टमेंट करना है और इससे कम है, तो आपको कोई पर्सनलाइज एडवाइस नहीं दे रहे हैं, आपको कोई बराबर गाइड नहीं कर रहे, और आप ऐसे ही या तो दोस्तों को पूछ के इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर कुछ अपना पढ़ के इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट अ सिस्टमैटिक वे ऑफ इन्वेस्टिंग. तो द नीड ऑफ द आवर इज़ टू गेट मोर एंड मोर क्वालिटी एडवाइजर्स हु कैन केटर टू द मास मार्केट. और इस इन दिस कॉन्टेक्स्ट जो आपका पहले भी था, आपका इससे पहले जो आपका टॉपिक था फिनटेक्स, these fintech companies can play a very big role, क्योंकि they will use technology to connect with people and they will use technology to deliver the advice and complete the execution process. So I think मेरे हिसाब से ये हमने पूरा जो wave देखा था discount brokers का, and we saw so many companies like Zerodha, Upstocks, they have created a lot of value for investors and for themselves. तो जो next बड़ा wave आने वाला है financial services में, that wave will be quality advice to the smallest of investors, and that is the need of the hour, and that I would say is something which
a media house like yours should focus on with the app. If you can empanel or onboard many of these smaller investment advisors, then they'll be able to cater to the mass market. क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि यहाँ पर आप आंख बंद करके निवेश नहीं कर सकते, आपको थोड़ा सोचना समझना पड़ता है, और फिर टाइम टू टाइम आपको आपका पोर्टफोलियो, चाहे म्यूचुअल फंड हो चाहे इक्विटी हो, आपको उसको रीशफल करना पड़ता है. तो यू नीड हैंड होल्डिंग, और वी आर वेरी बिजी इन अवर लाइफ्स, तो टाइम नहीं दे पा रहे. तो अगर आपको प्रोफेशनल हेल्प मिल जाती है तो इट कैन मेक अ बिग डिफरेंस. Deepan, Indian regulators are doing really fantastic job. But if you go back and see that investors have lost a lot of money not because of the regulatory mechanism per se, but the poor corporate governance in India. And majority of the losses of small investors is because the companies are not managing their affairs properly. A lot of hubris, there are a lot of bad decisions, and they finally landed into huge wealth destruction in the market. इस मोर्चे पे आपको क्या लगता है? Whether our regulators are somehow required to be more pragmatic? How do you see things coming in terms of where, because ultimately people don't know what is happening inside the board of a company. They simply buy the stock and then finally land into losing a lot of money, which is hard-earned money for Indians they are putting in the market. Where does this stands in terms of the Indian's regulatory system? Because that directly connects with the wealth creation and wealth destruction in the market. तो आई थिंक जो सत्यम का जो स्कैम हुआ था उसके बाद बहुत सारे रेगुलेशंस आए हैं. द एंटायर कंपनीज एक्ट हैज़ बीन रिवैम्प्ड एंड सेबी आल्सो हैज़ गॉट वेरी प्रोएक्टिव इन प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स. और बहुत सारे ऐसे रेगुलेशन आए हैं एंड कंपनीज हैव टू कंप्लाई विद देम टू एंश्योर दैट देयर इज़ ट्रांसपेरेंसी, देयर इज़ कंप्लीट एंड क्विक रिपोर्टिंग. और अगर आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स की अप्रूवल चाहिए. सो देयर आर मेनी मेजर्स बीइंग टेकन एंड द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ऑल्सो उनके ऊपर भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल चुके हैं. और एक्चुअली आप देखेंगे तो पिछले 10-15 सालों में देयर हैज़ नॉट बीन एनी मेजर लैप्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर से. और जो भी वेल्थ डिस्ट्रक्शन हुआ है दैट हैज़ कम बिकॉज ऑफ ओवर इंडेटेडनेस. माने कंपनियों ने बहुत ज़्यादा लोन ले ली, प्रोजेक्ट डाल दिए, प्रोजेक्ट फेल हो गए या डिले हो गए, जिसकी वजह से इंटरेस्ट के मीटर बढ़ते गए एंड देन दे वर नॉट एबल टू गेट द प्रोजेक्ट वायबल. तो आप देखेंगे तो बिगेस्ट मैक्सिमम लॉसेज, आई वुड नॉट लाइक टू नेम ऑन अ पब्लिक फोरम, बट द मैक्सिमम लॉसेज टू इन्वेस्टर्स हैव कम फ्रॉम द लार्ज कंपनीज विच आर व्हाट दे हैव बीन इन इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टेलीकॉम. और यहाँ पर जो है ना पिछले कुछ सालों में आरबीआई ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं. यू नो, फोर्सिंग द बैंक्स टू रिकग्नाइज द एनपीएस, ये इंश्योरिंग दैट अगर आप डिफ़ॉल्ट हो रहे तो इमीडिएटली आपको एनसीएलटी में जाना पड़ेगा. एंड दे हैव क्लीन्ड अप द फुल फाइनेंसिंग सिस्टम फॉर प्रोजेक्ट्स, जिसकी वजह से आई डोंट थिंक दिस विल गेट रिपीटेड अगेन. सो ऑन वन हैंड सेबी ने बहुत सारे रेगुलेशंस किए हैं टू इम्प्रूव कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स, रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बढ़ चुके हैं एंड नाउ वी अमंग्स द बेस्ट इन द वर्ल्ड. और दूसरी लेवल पर आरबीआई ने इतने सारे मेजर्स किए कि आई डोंट थिंक दैट फॉर द नेक्स्ट सेवरल डेकेड्स we'll be in the situation where there are such huge losses because banks have lent to companies and companies have not been able to repay their debt. So I think that risk factor is gradually coming down. और investor का perspective क्या है कि अगर आप अच्छे stocks खरीदते हो which have got low debt, high return on equity, बढ़िया businesses है, brands है, technology है, known names है, then I don't think you can go wrong. The problem comes कि आपको आपकी greed उस level पे ले जाती है कि you want to buy the momentum stocks. Momentum stocks में हमेशा आप cannot be a winner. दीपन, इन्वेस्टिंग में हमेशा एक कहा जाता है कि सबसे अच्छा बाजार वो होता है वहाँ जहाँ पे आप जो चीज़ें खरीद रहे हैं, जिनका को कंज्यूम कर रहे हैं, उन्हीं का स्टॉक भी खरीद रहे हों. इंडिया में अभी वैसा होता नहीं दिखता है. बहुत बड़ा कंजम्पशन मार्केट इंडिया का स्टॉक मार्केट से बाहर है, एक चीज़. दूसरा ये कि सेबी की तमाम कोशिशों के बाद भी प्रमोटर्स में अभी भी अपनी इक्विटीज़ को होल्ड करके रखने की, मार्केट में डाइवेस्ट नहीं करने की, नॉट गिविंग मोर शेयर टू द पब्लिक इज़ आल्सो अ बिग चैलेंज. सेबी इज़ एक्सटेंडिंग दीज डेडलाइंस. व्हाट इज़ स्टॉपिंग इंडियाज़ बिग ब्रांड्स विच आर नॉट coming to the stock market, but they are actually capturing a lot of consumption in India, like in food market or in
ऑटोमोबाइल मार्केट, बहुत सारी कंपनियां ऐसी जो मार्केट में नहीं है, हम उनके प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं बट उनके स्टॉक्स नहीं है मार्केट में. और व्हाट इज स्टॉपिंग promoters in India not to to divest their equity in favor of public? देखिए मेरी राय में the mass consumption items, the companies which are not listed are mainly MNC companies. जैसे कि we are using Netflix या Amazon आप use कर रहे हैं या फिर Hyundai motor car, they will never get listed in India. That is clear. अभी मैं आपको ये बताऊं कि a lot of the new generation platform companies, the new generation companies, they want to get listed. लेकिन जिस हिसाब से आपने देखा पेटीएम, जोमेटो, नाइका, ये मेरा अगला सवाल भी था आपसे. So these companies, maybe they got listed ahead of their time. Maybe the valuation was excessive at that point of time. And because of that, जो experience हुआ है इन कंपनियों का, that has put complete cold water on all the other companies of similar class which were looking at getting listed. तो उनका पूरा जो दरवाजा था वो बंद हो गया because people made so many losses in these 3, 4, 5 companies which got listed. वो तो उनका तो IPO हो गया, उनके investor को profit मिल गया, they must be laughing all the way to the bank, but we are left holding all the shares over there and Indian investors have seen huge mark to market losses. तो इसकी वजह से जो स्टार्टअप्स है इंडिया में, जैसे कि ओला है या फिर फ़ोन पे है या फिर स्विगी है, these are again day-to-day items which we are using. I think they will take very long to get listed because they are not profitable. और markets में we now are looking for these companies to actually show the profit. और अगर आप देखेंगे ना तो ये एक बहुत ही healthy trend है, क्योंकि कुछ सालों में ये जो promoters है, जो new generation companies है, they will not think in terms of cash burn. जो पूरा एक cash burn एक ऐसा था कि जितना आप cash ज़्यादा burn करते हो उतनी ज़्यादा valuation मिलेगी आपकी, तो वो पूरा जो thinking है ना वो reverse हो गया है. And now every startup company, whether it is listed or unlisted, their shareholders, whether they are public or private, they want a perfect roadmap to profitability. तो ये culturally I think ये बहुत ही अच्छी बात है, and it will improve the productivity of these companies and therefore improve the productivity of the nation as well, because जितना भी बड़ा investment हो रहा है, all the expansion in the economy is coming from these new generation companies only, and some of them are visible, some of them are invisible. So this is a very good trend and a very good development. But as I said, I think MNCs will never get listed. आपको वहाँ पे जाके उनका शेयर खरीदना पड़ेगा. और जो new generation companies है, they are still making losses, and I don't think they should get listed. But by and large, हमारे markets में बहुत ही बढ़िया diversification है when it comes to stocks and industry. मैंने आपको ये बताऊं कि after USA and maybe equal to China, जिस हिसाब से sectors है आपको invest करने के लिए, जो choice है आपको, you won't find anywhere else in the world. मेरा अगला सवाल न्यू इकोनॉमी स्टॉक्स पे था. आई थिंक इन्वेस्टर्स हैव लर्न देयर लेसन्स, प्रोमोटर्स may not have, whether regulators have also learned their lessons or not in this entire listing of the new economy stocks, and finally investors have lost a lot of wealth into it. When I say regulator, it means SEBI and the stock market stock exchanges. With what they takeaways from this entire boom which came a year back, when all the startups are actually queuing up to list in the market with very exorbitant valuations, which was not backed by the real profit. So इसका मैसेज क्या है इन्वेस्टर के लिए इस पूरे फिनोमेना का, कि हार्डकोर प्रॉफिट के बिना स्टॉक मार्केट माफ नहीं करेगा. स्टॉक मार्केट जो वैल्यूएशन है और जो इंटरनेट इकोनॉमी में हाई वैल्यूएशंस हैं उन पे उतना ट्रस्ट नहीं करेगा जितना कि वो ब्रिक एंड मोटर मॉडल के प्रॉफिट को पे ट्रस्ट करता है. क्या ये मैसेज है स्टार्टअप कंपनियों के लिए इस पूरे फिनोमेना का? आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए मेरा थिंकिंग थोड़ा अलग से है, क्योंकि मेरी राय में सेबी है या स्टॉक एक्सचेंज है, दे आर परफेक्टली राइट in not going into the valuation of the company. ये उनकी, that is not their domain, that is not their mandate. उनका काम यही है कि आप, उन्होंने जो regulations बनाए हैं आप उनको follow कीजिए. Have you been transparent? Have you disclosed all your risk factors? आपका prospectus detailed है, आपकी पूरी business plan आपने समझाई है. There are no malpractices when it comes to disinvestment or placement of stock.
तो they have given the checks and balances के आप जो rule of the land है वो आप follow करो. Valuation के लिए they cannot and they should not, और globally भी कोई भी regulator valuation पे opinion नहीं देता है. So they cannot say कि because आप expensive हो आप list नहीं कर पाओगे, वो उनको they should not get into that subject at all. हाँ, as investors in the market, professional investors also and amateur investors, they thought that they had understood these companies well, and the companies thought that the secondary market had understood them well, and that the secondary market investors would have the same patience and long-term vision as their private equity investors. लेकिन ऐसे हुआ नहीं. और जो हुआ वो is that the secondary market investors, professional or amateur ho, they are looking at quarter on quarter, क्या आप declare कर पा रहे हैं. Or these companies they think in terms of 3 years, 5 years, capturing the entire Indian market, changing habits, तो उसमें समय लगता है. और उस दरम्यान क्या हो गया कि पूरा जो ग्लोबल इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स आ गए, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए, और जो पूरा स्टार्टअप का वैल्यूएशन ग्लोबली था उस पर पूरा आई वुड से नॉट अ क्रैश बट वी सीन वेरी वेरी शार्प डिक्लाइन इन द स्टार्टअप वैल्यूएशंस ग्लोबली, और इसका सीधा सीधा असर हमारे मार्केट्स पर भी आ गया. सो आई थिंक दैट we cannot expect any of these startups or unicorns to get listed for a long time in India. और जो existing companies है अगर उनकी आप investor releases पढ़ेंगे तो सभी जो promoters है, MD, CEO है, they are always talking about हाँ 24 में will become profitable, 27 में will break even EBITDA, ये business निकाल देंगे तो बाकी का business जो core है वो profitable है. तो उनकी पूरी भाषा ये हो गई है कि instead of talking about eyeballs and subscribers and transactions, उनकी पूरी थिंकिंग, पूरा कम्युनिकेशन ये हो गया है कि हाँ हम प्रॉफिट करेंगे, यहाँ पर कॉस्ट कम कर रहे हैं. सो दैट इज़ आई थिंक अगेन अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट, एंड दे आर रीलुकिंग एट द बिजनेस मॉडल टू मेक श्योर दैट दे कैन लिव अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द इन्वेस्टर्स ऑफ द सेकेंडरी मार्केट. So before I open floor for questions, one last question, उसके बाद हम जो सवाल लेंगे. Indian stock markets have given very good return with the inflow of cheaper capital from the abroad. This time I'm talking about the balance of FPIs and DIs in the Indian market. हमको सबको पता है कि पिछला पूरा एक डिकेड था जब पूरी दुनिया में इंटरेस्ट रेट कम थे, कैपिटल चीपर थी, and a lot of money has traveled to emerging market including India, and Indian growth has attracted a lot of investment. Now the scenario is changing. We are going towards a different direction when cost of capital is rising. US is talking about 5.5% interest rate. European markets are going. Now, how do you see it coming up when the cheaper capital will not be available globally and also in India because interest rates are rising? ऐसे सिचुएशन में स्मॉल इन्वेस्टर्स को कैसी सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा भारत के शेयर बाजार में अभी भी विदेशी निवेशक FPI लेकर आते हैं, और वो निवेश इंडिया के लिए काफ़ी समय से FDI के अल्टरनेट के तौर पर भी आ रहा है, and it has helped India to make its forex reserves also. So how this whole shift which is coming, where the cheaper capital will not be there, what a smart investor should remain cautious about going forward 2 to 3 years down the line? See, you are ending with a very difficult question, because this whole thing about high interest rates is the real problem in the stock market just now. अगर आप कोई भी प्रोफेशनल इन्वेस्टर मुझे भी पूछेंगे कि मार्केट में इतनी बिकवाली क्यों है, वाई वी हैविंग सच सेलिंग प्रेशर, वाई मार्केट इज गॉन नोवेयर फॉर लास्ट 1 ईयर, तो उसकी वजह यही है कि इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा है. जब भी इंटरेस्ट रेट्स ज़्यादा रहते हैं तो ग्लोबली एंड इन इंडिया more and more liquidity goes toward the debt market, and that is what we are seeing in our markets. पर ये सब cycles रहते हैं, और if interest rates are high, eventually when global economy goes into recession, then the central bank will come and reduce the interest rates. So as a patient investor, आपको just sit on your chair, do not panic. एक टाइम आएगा कि ये पूरा इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट का साइकिल जो है वो रिवर्स हो जाएगा, and from that point on you will see fabulous returns coming into the equity market. So you have to just wait patiently for that. Second thing, if I may just say that there were 3 structural problems with India. One, we had coalition governments,
Second was oil prices, which was then getting reflected in budget. And third was incessant selling by FIIs. अभी आप देखेंगे कि ये तीनों तीन structural problems हैं ना solve हो चुके हैं. We have a very strong government at the center which is pro reform. Oil prices का जो भी है बढ़ते हैं घटते हैं पर उसका असर government finances पे नहीं आता है. There is no subsidy, massive subsidy given by the government to when the oil prices go up. और तीसरी बात फ्रॉम स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू, जब भी कोई भी प्रॉब्लम होता था वर्ल्ड में, लाइक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, .com बबल, फिर वो सॉवरन क्राइसिस थी 12-13 में, यू वुड सी मैसिव FII सेलिंग and our markets will be down 20-30%, also sometimes 50%. But now we have the power of the small investor, which is a good counterbalance to the FIIs. और ये जो small investors का जो पैसा है, that is what we need to channelize in a very systematic manner into the stock market to act as a counter force to the FIIs. आप जानते हैं कि FI की जो holding है, it is at a multi-year low, और retail की जो holding है is a multi-year high. So this is a phenomenal position to be in. और अगर हम ये trend और भी strengthen कर सकते हैं, तो हम हमारे we would be the master of our destiny. And not some foreigners, who sell for some reason के Silicon Valley में बैंक उठ गया तो इंडिया में जाके बेचो, तो ये will get out of those risk factors. सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पिछले 3-4 साल में इंडिया के स्टॉक मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है. विदेशी निवेशकों पर डिपेंडेंस कम हुई है. भारत के छोटे निवेशकों का पैसा बाजार में है और वो भी म्यूचुअल फंड और SIP के थ्रू आया है. और रेगुलेटर्स ने जो रिटेल की स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ हैं उनको कट करना शुरू किया है. हमने देखा अभी नीलेश यहाँ बोल कर गए कि देयर इज नो फ्यूचर फॉर स्मॉल इन्वेस्टर्स इन फ्यूचर ट्रेडिंग. सो दिस मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस कमिंग इन स्टॉक मार्केट. सो India has got huge saving reserves. If they'll start channelizing in the market, dependence on foreign funds will definitely reduce. और इसलिए हमने देखा कि इस पूरे पीरियड में भी इंडियन स्टॉक मार्केट में उतनी वॉलिटिलिटी नहीं आई. आई एम ओपनिंग फ्लो फॉर क्वेश्चंस. वी हैव टाइम फॉर ओनली 2 questions. I think one gentleman at that side. Please introduce yourself. Here. Thank you very much for enlightening session. My name is Bharat Mehta. I am calling from Modern Group. Sir, जो ये बात है ट्रस्ट ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर, मुझे ये जानना है सर कि रियल रेट ऑफ रिटर्न जो होती है, आज 90% ऑफ द जो अपना इन्वेस्टमेंट है वो रियल एस्टेट में है, बैंक में, FDs में पड़ा है, गोल्ड में पड़ा है. तो ये जो रियल रेट ऑफ रिटर्न जो होता है, ये म्यूचुअल फंड वाले क्यों नहीं ज़्यादा हाईलाइट कर सकते हैं? वाई दे आर नॉट एजुकेटिंग द स्मॉल इन्वेस्टर कि अल्टीमेटली डाउन द लाइन यू हैव टू सी हाउ यू आर बीटिंग द इन्फ्लेशन और आपकी वेल्थ क्रिएशन कैसे होती है. तो ये एक मेरा प्रश्न था. और क्या इज़ इट पॉसिबल कि हम ये इंडस्ट्री को कुछ सेफ्टी नेट प्रोवाइड करें? अगर आप बोलते हो कि 5 साल तक इक्विटी में पैसा रखो तो आपका रिस्क मिनिमाइज हो जाता है, कैन वी क्रिएट सम सेफ्टी नेट बाय सेइंग कि ओके आपको रेट तो मिलेगा, रिटर्न तो मिलेगा, बट एटलीस्ट वी गिव यू सेफ्टी फॉर योर कैपिटल कि आपको अभी 60% चल रहा है तो हम 4% तो कम से कम आपको गारंटी देते हैं. कैन यू डू समथिंग टू द ट्रस्ट ऑफ द स्मॉल इन्वेस्टर्स? आई थिंक दैट कैन टेक इट लॉन्ग वे. थैंक यू. हेलो. या जो आपने सेफ्टी नेट की बात की है, आई थिंक इट इज़ अ वेरी नोबल थॉट, और अगर हो सकता तो डेफिनेटली एज अ इंडस्ट्री वी वुड ट्राई टू डू इट. पर एंड ऑफ द डे ये प्रोडक्ट ही ऐसा है कि उसमें सेफ्टी नेट हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग इन अ बिजनेस. जब भी आप शेयर खरीदते हैं यू आर बाइंग पार्ट ऑफ द बिजनेस, और फिर बिजनेस की जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ये रहती है कि बिजनेस अच्छा भी चलता है और ख़राब दिन भी आते हैं. आप कोई भी बिजनेसमैन को पूछेंगे तो ऐसा नहीं है कि कंसिस्टेंटली उसका प्रॉफिट्स आते ही रहेंगे. इतने सारे उतार चढ़ाव आते हैं. सो देयरफॉर देयर कैन नेवर बी एनी गारंटी, बिकॉज द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी कैन नॉट बी गारंटीड. अगर आप ऐसी कोई कंपनी दिखाएंगे जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी गारंटीड है, जहाँ पर ग्रोथ 15-20% गारंटीड है, then as an industry we can give a guarantee to the investor.
And since that is not possible, I think safety net kabhi bhi aa nahi sakti. It's not been there for the last 400-500 years or so. The first part of your question was comparing equities to other hard assets like real estate, gold, etc. So, wahan par what has happened, I feel, is that returns in those alternative assets has not been as good as equity in the last 5-10 years or so. I don't know going forward what will happen, but generally people have realized that equities में returns ज़्यादा आ रहे हैं और ये जो अब जो wave of investors जो आ रहे हैं ना, they are the type who can not really invest in real estate also, क्योंकि real estate में investment करने के लिए आपको कम से कम 15-20 लाख तो invest करना पड़ता है, whereas the investments which are coming just now are 5,000, 10,000, 20,000. SIPs जो है वो 500 रुपए से चालू कर सकते हैं. So what we are seeing, the money which is coming in from the poorest of the poor households, who for them there is no other choice. Ya to you could buy post office savings, ya make bank deposits, and only now last, I would say 2-3 months, the bank deposit rates, the fixed deposit rates have gone to 7-8% or so. ये तो आपको 6% मिलते थे until about 6 months ago or so. So from that point of view, for that class of investors, I think equity is the best option. जहाँ पर आप टुकड़े-टुकड़े में invest कर सकते हो, you can buy small, invest at a regular basis, small amounts, and create a good performing portfolio over a long period of time. So there are many advantages. वो पूरा tax advantage भी है, ease of doing business भी है. जैसे मैंने कहा था, मैंने paperless आप कोई भी share खरीद सकते हो. That's not possible when it comes to real estate or some of the other alternative assets. So I think there are certain superior benefits of investing in financial assets, and we will see more and more money flow because of that. One more questions I can take. Yes. And that's the last question for that. We all talk about that mutual fund generate return and all that, okay. But the fiasco which happened in Axis Mutual Fund in the recent time, or something like that, or in the Franklin in the earlier one, it generally depressed the investor from the equity market or mutual fund because the small investor put the mutual fund money, thinking that his money, at least they will, okay, market go up and down, that's okay. But at least integrity will not be doubtful. But that is happening, that how to control that? Yeah, see, there will always be a few bad apples, and I regret really what happened with Axis Mutual and before that with Franklin Templeton also. These things in a financial market, ये होता है कभी-कभी. You cannot always get everything right, और कुछ ऐसे elements आ जाते हैं जिसकी वजह से पूरे market को की बदनामी हो जाती है. But even if you look beyond these, I would say anomalies, the overall market is very sound. और जो भी problems आते हैं, ऐसे scams आते हैं, they are few and far in between, or the amount involved is very less compared to the size of the industry. Or if it is your bad luck that you are there in a company or a mutual fund which has got some problem like this, then I think you will have to suffer. But by and large, अगर investor अपना portfolio, अपनी savings diversify करके रखता है, then that is one way to avoid this risk factor. But there is no way that we can find a perfect world जहाँ पर कोई भी crime होगा नहीं. I think it's not possible in any society, in any world. So that you are correct, but at the same time, the investor education fund is there. Why not the government use that investor education fund for this purpose? Why is that money lying in investor education fund and not utilized for saving that, at least not big investor, at least up to 1 lakh investment or 50,000 investment or whatever the small amount. But investor education fund is for what actually? I don't know why they're accumulating money and what is not using for anything. So for the record, the stock markets have a separate investor protection fund. और वहाँ पर अगर कोई stock broker की default या scam की वजह से investor को loss होता है, then the stock exchange or rather the clearinghouse from its investor protection fund is actually making those payouts. So when it comes to direct investment through stock brokers, आपको थोड़ी बहुत राहत वहाँ पर मिल रही है. When it comes to mutual funds, I think that is something which I don't think is really possible from a mutual fund perspective.
But, it depends upon the quality of the mutual fund manager and the quality of the asset management company. But that is something, which is very difficult to implement also, because they don't have a single regulating or a single body like the stock market. So, I mean, we can make the suggestions to the regulator, but, I don't think it's going to be easy to implement. So, yeah. I will have a one-to-one discussion with you on this thing, and I'll give you my Sir, perspective. thank you. Thank you for your intervention. And this is a very pertinent question about investor education fund has to be utilized for better. Now we have come to the end of this. This is just end of the final session of this Personal Finance Summit. And I would like to thank Deepan for such an enlightening session, because there's a lot of questions there. और इस सेशन का कोर हमने स्मॉल इन्वेस्टर्स लिए रखा था, क्योंकि स्मॉल इन्वेस्टर्स स्टॉक में भी हैं और म्यूचुअल फंड में भी है, और उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं जिन सवालों के जवाब दीपन से उन्हें मिले होंगे. और अब हम इस सत्र के समापन पे हैं. ओवर टू गौरव एंड प्रियंका. थैंक यू सर, थैंक यू अंशुमन सर, थैंक यू दीपन सर. बहुत ही उपयोगी और शानदार सत्र रहा, और खासकर रिटेल इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से काफ़ी कुछ जानने को और सीखने को मिला इस सत्र में. एक चीज़ हम यहाँ पर ज़रूर बता दें अपने दर्शकों को कि Money9 के ऐप और नेटवर्क, यूट्यूब, फेसबुक चैनलों पर बड़ी संख्या में इस वक्त लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपने फीडबैक दे रहे हैं. आप भी उसके साथ जुड़ सकते हैं. और अब मैं TV9 के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO वरुण दास जी से आग्रह करूंगा कि प्लीज़ सर आप मंच पर आएँ और दीपन शाह जी को सम्मानित करें. एक जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं वरुण जी का और दीपन जी का. कैन वी हैव द मोमेंटोस प्लीज. और इसके साथ ही मैं अपनी टीम से कहूंगा कि वो श्री कलश भी लेकर आए, जो सुख का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है, भारतीय संस्कृति का प्रतीक है. वरुण जी. Great session. Thank you so much, all of you. One nice clip for this memorable summit and memorable conversations that we've had. Thank you, Dipen ji. Thank you, Barun sir. Please take your seat. Anshuman sir, I will request you to just stay back. And I think after the entire day of lot of conversations, ideas, I think it's time to say thanks to everyone. I would request you to please give your vote of thanks, sir. Thank you, Deepan, for such an amazing session. A lot of questions already there, but we were just a little short of time. I would like to thank everybody here who's there for the entire day. But I will start thanking first from Minister of State, Honorable Anupriya Patel. She has traveled all the way from Delhi in this morning to inaugurate this very important Personal Finance and Financial Freedom Summit. I would like to thank Radhika Gupta. She came on a very short notice, addressed a very important session and given a lot of guidance. I would like to thank Nilesh and all the panelists who were there to come and discuss the issues which are very core to the India's pocket and India's financial future. I would like to thank entire TV9 network team, events team, because without them this was just impossible to do that. Entire team was working from last many weeks, entire nights and day to bring this entire Financial Freedom Summit to a success. I would especially thank entire Money9 team, the very enthusiastic team which is working here in Mumbai and also back in our Noida studios, doing all the lives and everything. This fantastic team has pulled it through very well from a very short notice. Especially I thank lastly, because he's our MD and CEO, Barun Das, for mentoring this entire idea of creating a special vertical for personal finance and
setting us the tone for the future of India's finance will be decided. But before we close this session, I would like my PCR team to just play the personal finance super app video before I conclude the session, because that would be the message that keep your mobiles ready. India's first personal finance super app is just coming. Welcome to the world of Money9. Money9 brings you India's first personal finance empowerment super app, now in 10 languages. Money9 super app will offer a unique machine learning, voice search powered personalized interface by its pioneering multi-screen engagement architecture. The Money9 super app will offer personal finance news analysis wisdom and guidance via video, radio, reels, live shows, interviews, comic and specialized documentaries. Money9 super app will empower its subscribers via live helpline, expert exchange, chat shows, quiz and games, money education, community connect ratings of financial products and gateways to transactions. Ladies and gentlemen, please keep your mobiles ready to become the part of a new revolution in personal finance empowerment. Money9, Azadi, Paise Ki. Thanks everyone. Thanks entire team. Thank you very much. Thank you everyone. बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जो हमारे TV9 नेटवर्क और Money9 के इस फाइनेंशियल फ्रीडम समिट में आए। आप सभी का बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमें देने के लिए। और प्लीज़ डिनर का इंतज़ाम है, हमें अच्छा लगेगा। आप लोगों ने दिन भर अपना वक्त दिया है। अब हमारे साथ हम कुछ बातें करेंगे, कुछ गप मारेंगे, कुछ हंसी मजाक होगी। प्लीज़ स्टे बैक।